Hello, Ritik. आज तो मैं बस स्टार्ट ही करना था मुझे किसी तरीके से so that's why I'm on live or I have started I have selected few questions तो let's discuss आज मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इस जुलाई अटेम्प्ट एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैं आज मॉक पेपर ही कर लूँगा लेकिन आई हैव कम हाँ एटलीस्ट देखते हैं फिर कल से और ज्यादा रेगुलराइज करेंगे तो टुडे आल्सो आई वाज वेरी बिजी आई वाज नॉट वेरी मच होपफुल कि आप दोनों भी आ पाएंगे बट आई एम हैप्पी यू आर प्रेजेंट तो लेट्स begin with few question yes हार्दिक हेलो हार्दिक आज मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कर रहा हूँ लाइव ओके ठीक है तो ये सामने ऐसे क्यों आ रहा है तो स्क्रॉल कर जाएगा है ना तो आज तो बस मैंने ऐसे एक ट्रायल टाइप का कर रहा था फिर कल से और ज्यादा सिस्टमैटिक अभी मुझे अराउंड 10 डेज तक एवरी डे इसके लिए भी लाइव करना है और भी दूसरे चीजों के लिए भी लाइव करना है सो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि हमने करना है प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे a man leaves his house for a cycle ride he comes back to his house after half an hour so after half an hour covering a distance of 1 kilometer यानी कि एक half an hour में and he come back to his house covering a distance of 1 kilometer 1 kilometer what is his average velocity average velocity average velocity के लिए क्या कर रहे हैं सिर्फ only this much data is given so average velocity is total displacement covered upon time duration or in the given situation displacement is 0 why because the person has returned back to its original situation from where he had started its motion so that's why 0 upon a time given is equal to 0 so hence 0 वाला ऑप्शन यहाँ के लिए करेक्ट होगा true and now next question
The magnitude of the ये क्वेश्चन कवर अप कर रहा है रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. अब ये डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को पहले टैकल करेंगे. The magnitude of the vector product of two vectors is 3 times magnitude of vector product of two vectors is 3 times the scalar product. Vector product मतलब cross product is equal to 3 times dot product. ये given है. The angle between the vectors we want to determine. What are the options given? A 4 pi, B 3 pi, very confusing. C pi by 3, D pi by 2. How to go about this question? That's very simple. A cross B matlab AB sin theta 3 AB cos theta. AB cancel. It implies that tan theta three times the scalar, the angle between them. अभी भी आप लोगों की कोई रिस्पांस नहीं आ रही है. You can give your own responses also for the question. Yeah, this is root 3. It was given root 3 times. So tan theta is equal to root 3. It implies that theta is 60 degree or pi by 3. So hence, this is the question. Question number 2. Now, third question. This question is slightly theoretical. क्या है भाई? A ball of mass m is thrown vertically upwards. What is the rate at which the momentum of the ball changes? This question is slightly related to theory और बहुत ही थोड़ी सी ट्रिक है. ये न्यूमेरिकल नहीं है. Related to second law of motion. Firstly, I would like to write the question. Question 3 for today. A ball of mass m is thrown vertically upwards. What is the rate at which momentum of the ball changes? क्या rate है? What is the rate of momentum?
मोमेंटम का रेट क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ मोमेंटम फॉर द बॉल, जबकि बॉल का मास m है जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की गई है। ऐसे समय में ऑप्शन 0, B, mg, C, infinite, D, data insufficient. Or here it should be mg only. Why? Because from Newton's second law of motion, rate of change of momentum with respect to time for any system is directly proportional to external force. External force के बराबर होता है rate of change of momentum. So hence option number, because यहाँ पे external force is mg, gravitational force in the given situation. क्योंकि जैसे ही हमने बॉल को ऊपर फेंका, वो always एक वेट से कंट्रोल हो रहा है, अपने ही वेट से कंट्रोल हो रहा है। Demon gaming, yes. I'm unable to recognize you. Sorry, आप कौन से नेटवर्क से आए हैं? I'm not able to recognize you. But anyway, you are most welcome in my live. Moving ahead to the question. अब बढ़ते हैं आगे. Now this one is again थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन है, बहुत अनयूजुअल. अनयूजुअल क्या है? Because this question is related to अच्छा, okay, you are Suryan's friend. Most welcome. So are you aware of that I'm his father? Right now Suryan is also active in handling my channels. He's working right now. वो लगातार मेरे लाइफ पे वो भी कंट्रोल कर रहा है, एंड ऑल टेक्निकल इश्यूज ही इज हैंडलिंग ऑल द टाइम. तो बहुत बहुत जल्दी आप लोग के क्लास के लिए मैं फाउंडेशन की वीडियोस भी डालने वाला हूँ. इवन आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कौन से टॉपिक के लिए. अब तो आपका मंडे को एग्जाम है, तो डेफिनेटली फॉर नेक्स्ट एग्जाम आपके सिलेबस से भी मैं कोई टॉपिक उठाकर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ. यस, एंड you can also give your own choice. So moving ahead, now next question. This next question is related to elastic potential energy. Let's see elastic potential energy. Where is it? Where I have kept.
Now, this question is related to elastic potential energy. How? Let's see. Question number 4. A wire suspended vertically from one of its ends is stretched by attaching a weight. मतलब इस तरीके से कोई वायर है एंड उस पे कोई वेट हैंग कर रहा है और this weight is of 200 Newton to the lower end. The weight stretches the wire, whatever the length is. Length का भी हमें पता भी नहीं है. The only thing we are aware of is 1 millimeter extension because of its hanged weight. So extension is 1 millimeter because of this weight. Then the elastic energy is stored. और जैसे ही ये hang होगा तो because of this tension, elastic potential energy has to be stored in the wire because of this stretching. तब फिर ये amount of elastic potential energy हमें मालूम करनी होगी. Elastic potential energy stored हमें मालूम करनी है. Options are 0.2 joule, B 10 joule, C 20, and fourth option is 0.1. Let's see how to go about this. 0.2 joule लगता है शायद आपके आंसर रॉन्ग है, बट स्टिल लेट्स ट्राई. यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा 1/2 because elastic potential energy is equal to work done, and work done is equal to force into displacement. लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज फोर्स कंसीडर करनी है, तो hence 1/2 has to be average of this end and this end. इन दोनों का एवरेज ऐसे समय में हम लोग एवरेज ले लेते हैं, तो hence 1/2 और फोर्स तो हमें है 200 और डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली एक्सटेंशन. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एक्सटेंशन यूज होगा, वो बात की बात है. अगर कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है. यस, नाउ यू आर राइट. दैट वे ये 0.1 जूल होगा. तो ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप. और उनकी डेट निकल आई है फॉर 12 जुलाई टू 18 जुलाई. इस रेंज में एग्जाम्स आर बीइंग conducted. So that's very good to see.
आप इस एग्जाम में अपियर नहीं होकर भी yes, yes. You made one very small silly mistake. You were correct. 200 into 1 millimeter. So here, 1 millimeter, that means 1 into 10 raised to minus 3 meter. And or यहाँ पे यानी 10 raised to minus 1 joule, that is 0.1 is your answer. है ना? That's nice. You are applying. और और कल से तो मैं और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आज अभी जल्दी में बस आई हैड टू स्टार्ट एनी हाउ कल तो मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस और मोर इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ आऊंगा आज जल्दी में सेलेक्ट नहीं कर पाया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में से एंड कल तो मेरा ये भी प्लान है कि ऑसिलेशन की वीडियो भी डालूं और भी पता नहीं ना जाने अभी मेरे एजेंडा में 8-9 टॉपिक्स हैं अलग अलग जेई नीट सभी के now this time again another question is related to rotational dynamics अब आप लोग गेस करोगे कि ये टॉपिक रोटेशनल में कौन से स्मॉल टॉपिक से है चैप्टर तो आई एम टेलिंग यू लेट्स सी the problem is talking about the child swing in sitting position stands up अगर ऐसे 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 करके स्विंग कर रहा है मान लो मेरे दिमाग में तो वही वाला स्विंग आया तो इस स्विंग पे अगर अब चाइल्ड कहीं पे भी बैठा हुआ है नाउ सडनली ही स्टैंड्स अप if he is now standing in standing position what's the difference the time period of the swing will पहले वो सिटिंग पोजीशन में था नाउ ही इज इन स्टैंडिंग पोजीशन इन द स्विंग द टाइम पीरियड option of the swing increases b decreases c remains same increase if the child is tall and decrease if the child is short पहले तो आप लोग गेस करो कि ये कौन सा टॉपिक का है ये स्विंग मतलब वो झूला टाइप the concerned topic is decreases
हाउ? लेट्स ट्राई, देखते हैं। अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया है तो मतलब कि यू आर अवेयर ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हिच सेज I omega product constant, law of conservation of angular momentum, L, that is I omega constant. That means I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जा रहा है अगर बॉय in standing position to some mass distribution is going away from axis of rotation. If L is the distance between us, center of mass is raised and L will decrease. Agar what you said, what you say, the center, if L is the distance between the center of mass, ठीक बात है। तो जैसे ही वो खड़ा हो जाता है तो when the boy stands, his center of mass is raised. Yes, एकदम definitely center of mass raise हो जाता है। And L will decrease. Yes, therefore the time or L is the distance between the तो अच्छा आपने L को डिस्टेंस ले लिया है तो L अगर L will decrease, therefore the time distance अगर decrease होएगा तो moment of inertia decrease होगा तो ओमेगा increase होगा। Yes, you are right. यानी कि ओमेगा increase होगी। आपने पूरा complete explanation। अगर L decrease होगा तो यानी कि moment of inertia decrease होगा and आपके हिसाब से corresponding distance will decrease because center of mass went away. और इस वजह से it implies that moment of inertia increases, sorry, decreases. अगर ये moment of inertia decrease होगा तो it implies that omega increase होगा। omega increase होगा मतलब because omega is 2 pi by t. So then time period increase, sorry, decrease. है ना? This is सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन। ऐसे आपका अप्रोच एकदम बेसिक अप्रोच एकदम सही था और ये तो जेई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। और पता है हार्दिक,
जेई मेंस की टेंटेटिव डेट आ गई है। टेंटेटिव डेट आ गई है। इट इज रफली इन अगस्त। मुझे बहुत सारे वीडियो डालने हैं। अच्छा, ओके, यू आर। तो अभी तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है। मतलब ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है। हम्म। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आई थिंक फॉर टुडे नाउ आई एम टू डू लास्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। If the ratio of maximum to minimum intensity, question talks about if the ratio of maximum to minimum intensity another this one is numerical, slightly numerical based. If the ratio of maximum to minimum intensity in beats is 49. That is very unusual number। बहुत ही अनयूजुअल नंबर है। Then the ratio of amplitudes, of two progressive wave trains is A option 7:1, B option 4:3, C third option 49:1, D 16:9. Probably for today, I think this is last question I'm to do. So how to go about this? और ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी I max
to I minimum is A plus B whole square minus B whole square. ये रिलेशन है मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी के बीच का रेशियो का के लिए, that is equal to A plus B whole square upon A, where A and B are amplitudes of both the progressive wave trains. यानी A पहले वाले ट्रेन के का एम्पलीट्यूड है और B दूसरे वाले का. So that means इसका मतलब ये हुआ, I guess the answer, but it's not correct. हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप गेस करो, you let me know. ये भी ऐसे 12 बोर्ड्स में भी के लिए भी आपने प्रिपेयर किया हुआ होगा. तो that is again very simple, और ये गिवन है 49:1. तो सिंपली हम लोग क्यों ना स्क्वायर रूट कर दें इस गिवन इक्वेशन को. A plus B upon A minus B is 7 upon 1, cross multiplying A plus B is equal to 7A minus 7B, और ये हो गया 8B is equal to 6A, therefore A upon B is equal to 8/6. It implies that A is to B is equal to 4:3. 7:1 or 4:3. One of this is, इसमें भी आप गेस कर दिया. Now this is the question answer. Now I hope you must have enjoyed this live, and और भी क्वेश्चन आप करना चाहोगे? अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बिकॉज आज तो मैंने लेट स्टार्ट ही किया था, बट मैं कल भी अराउंड 10 o'clock तो जरूर आऊँगा, और पता नहीं शायद दिन में भी करूँ, दिन में कोई वीडियो वो लाइव नहीं. So let's find up for today. See you tomorrow again. आज तो मेरे वो एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स नहीं आ पाए, लगता है मैं बहुत देर कर दिया इस वजह से. They could not turn up. 2 of them, I was waiting for them. तो चलो ओके बाय, और कल हम लोग फिर से मिलते हैं.